Okay, good evening everyone. So today again we'll be discussing about the remaining part of Venn diagram. So whatever is its difficulty part, difficulty level will increase. Okay, अब तक जो हमने 2 सेशंस डिस्कस किए थे, अब आज के प्रॉब्लम से वो उनसे थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा होगी. उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मीन्स जो हमारा मैंडेटरी रहता है. Myself Abhijit Phansalkar. I have been in this CAT teaching field for more than 10 years. I have conducted more than many thousands of hours of CAT training, and I have trained more than many thousands of students for CAT. Now, how to connect with us, that you are aware. Just install Unacademy learning app and follow simple steps. सबसे important, why connect with CAT? Yes, good evening प्रियांशु कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कैट इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल ऑफ मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और अगर आप कैट के लिए प्रिपरेशंस करते हो तो साइमल्टेनियसली ऑलमोस्ट 8 to 10 एग्जाम्स के लिए आपका प्रिपरेशन तैयार हो जाता है, मोर देन 90%. जैसे कि स्नैप, सीईटी, एनमैट, जैट, जीमैट, जेआरई, सीमैट, बैंक्स, एलआईसीज, रेलवेज, इन सब एग्जाम्स के लिए आपका प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली 90% से भी ज़्यादा हो जाता है. सिर्फ स्नैप और बैंक्स में थोड़ा सा जीके का कंसेप्ट रहता है. जीके जितना आप करोगे उतना कम ही रहता है, राइट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू कनेक्ट विथ अस. देन यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन. वो आप देख सकते हो कितना इकोनॉमिकल और कितना अट्रैक्टिव पैकेज है. यू कैन इजीली compare it with any other available platform in the market. So for 1 year it is 17,500 and for 2 years it is 21,000. But if you refer to my referral code ASP10, you will get 10% discount on whichever course you select. Okay, so यहाँ से 1750 कम हो जाएंगे. So net it is 15,750. यहाँ से 2100 कम हो जाएंगे. सो नेट इट इज़ 18,900. इसका एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स भी बता देता हूँ. इफ़ यू डिवाइड दिस बाय 365 तो पर डे आपका एक्सपेंसेस होगा सिर्फ 43 रुपीज़ पर डे. एंड हियर इफ़ यू डिवाइड बाय 730 तो पर डे इट विल बी जस्ट 25 रुपीज़. नाउ 25 रुपीज़ पर डे एक्सपेंसेस आपको वहाँ क्या मिलता है आजकल? आज के दिनों में वहाँ सिर्फ एक वड़ा पाव और एक कप ऑफ टी मिलता है. लेकिन यहाँ आप हमारे साथ अगर 2 साल तक रहेंगे तो आपका करियर बन जाएगा, आपका फ्यूचर बन जाएगा. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो गो फॉर MBA. मीन्स कैट में भी अगर आप MBA के लिए अगर करना चाहते हो तो नथिंग बेटर देन दैट. मेनी ग्लोबल कंपनीज, मेनी गुड कंपनीज विल डेफिनेटली कॉल यू. अब एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी अभी कैट 2020 के लिए, नाउ इट इज ऑलमोस्ट ऑन द डोर. टोटल 32 क्वेश्चंस होते हैं. इस साल थोड़ा फर्क पड़ने वाला है उसमें बिकॉज ऑफ दिस कोविड पैंडेमिक एज यू आर अवेयर. लेकिन स्ट्रैटेजी विल बी द सेम. सो इन ऑल यू विल फाइंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 3 marks एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 mark इज डिडक्टेड. सो कॉलेज एग्जाम से ये टोटली अलग से स्ट्रेटेजी है. इन कॉलेज एग्जाम वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है. इफ़ यू गेट अ स्कोर ऑफ 24, आपका परसेंटाइल होता है 90, फॉर विच वन हैज़ टू सॉल्व ओनली 8 क्वेश्चंस. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इज इट सो डिफिकल्ट? आराम से हो जाएगा. सेकंड स्लॉट 35 इज द स्कोर, 95 इज द परसेंटाइल. बिकॉज नॉट इज इन ऑल बी स्कूल्स एडमिशन के लिए परसेंटाइल देखा जाता है, नॉट द परसेंटेज. फॉर विच वन हैज़ टू सॉल्व ओनली 12 क्वेश्चंस विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी. थर्ड स्लॉट ये इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा मैं टारगेट रखता हूँ. सो 99 इज द परसेंटाइल फॉर विच वन हैज़ टू सॉल्व ओनली 16 क्वेश्चंस. सो 32 में से सिर्फ आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी. बस वही स्ट्रैटेजी आपको रखनी है. ओके, सो इस साल जैसे उन्होंने अभी आपको जो पता चला है कि दे हैव रिड्यूस द टाइमिंग. सो फ्रॉम 3 hours इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 2 hours एंड एवरी सेक्शन हैज़ बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 60 minutes to 40 minutes.
So accordingly now it is assumed that the number of questions will also get reduced down by 1/3. So 32 जो questions है, instead of that it is likely that you will get 20 to 22 questions, but strategy should be the same. Can you hear me? Yes, can you hear me? Otherwise I will be putting on the mic. Can you hear me? Hello, hello. Chat is on. Can you hear? Okay, sure. So now let us go to the problems directly. Okay, we will start with the problems. Okay, just look at this question. Please read it carefully. Now they have given a question. In a class of 130 students, 85 passed in maths, conditions देखिए, 60 passed in science and 10 failed in both. Okay, so there are two parameters जो overlap होंगे. So this is for maths, this is for science. Denomination वैसे रहेगा A, B, G and N. Yes. Yes. Any doubts? आवाज आ रही है मेरी? So the question is like this: in a class of 130 students, 85 passed in maths, 60 passed in science. This is, voice is clear? Okay, fine. Thank you. आप लोगों ने बताया था इसलिए मैंने ये हेडफोन मंगवाया है स्पेशली फॉर यू. चैट पढ़ सकते हो क्या आप सर?
Yes, please. I can read the chat. कोई डाउट है आप पूछ सकते हो फ्रैंकली. नाउ दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम जो हम पिछले 2 दिनों से डिस्कस कर रहे थे. सो आज का जो क्वेश्चंस है, यस, फर्स्ट वन इज या करेक्ट करेक्ट करेक्ट. कल कहाँ बंद था? सो 130 मीन्स पहला इक्वेशन बनेगा टोटल दैट कंप्राइजेस ऑफ ए बी जी एन. यहां मैंने स्पेसिफिक ब्रैकेट डाला है क्योंकि ये सेक्शन है दैट इज फॉर एग्जैक्ट 1. ये जो है इट इज फॉर एग्जैक्ट 2 और फॉर बोथ. सो यहां डिनोमिनेशन हमेशा एक सीक्वेंस में देना. ए बी जी इज जनरली द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल, बोथ या 3 या 4 जो भी होंगे. सो 85 पास्ड इन मैथ्स. सो मैथ्स की टोटल इट इज ए प्लस जी इज 85. ओके, सो फ्रॉम द डेटा ट्राई टू फॉर्म द इक्वेशंस. 60 passed in science, so b plus g will be 60. और ये पहला बेसिक इक्वेशन दैट इज 130. 10 failed in both means n is going to be 10. Yes, Priyanshu, perfect. It is 95. Correct है. Perfect, Priyanshu. Raghav, correct. Raghav, correct. Okay, I will shift over. मैं शिफ्ट होता हूं. I will shift over. Okay, अब दिखाई दे रहा है? Okay, अभी दिखाई दे रहा है? So now you will find n is given as 10. तो यहाँ इक्वेशन बनेगा a plus b plus g adds 120. Okay, now we will get all values. a plus g is 85. तो b की वैल्यू बनेगी 35. b plus g is 60. तो a की वैल्यू होगी 60. a 60 तो g हो जाएगा 25.
सो जी की वैल्यू हमें मिल गई. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ, मीन्स वी वांट द सेक्शन जी. सो इट इज 25. करेक्ट है. सो आप लोगों को जो आंसर मिला है परफेक्ट. नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. अब यहां देखिए, ये जो है ये मैथ्स में पास हुए, तो ये जो है ये मैथ्स में फेल हुए, जो मैथ्स के बाहर होंगे. ओके, सो हियर 60 जो है 60 रिप्रेजेंट करता है 60 इज पास्ड इन ओनली मैथ्स, and at the same time it also represents failed in only science. Similarly 35 represent करता है passed in only science or can be represented by failed in only maths. Yes Priyanshu, correct है. परफेक्ट. सो 60 जो है 60 इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ओनली मैथ्स, और इट कैन बी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली साइंस. दैट ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली 35 is the value that number of students passed in only science, and similarly parallel the number of students who failed in only maths. So वो दोनों एंगल से रिप्रेजेंट होता है. So how many students failed in exactly one subject? The target is A plus B, which is 95. And the number of students who failed in maths as a percentage of number of students who failed only in science. अब साइंस में, सिर्फ साइंस में कितने फेल हुए उसके कंपैरिजन में मैथ्स में फेल हुए वो क्या है. सो मैथ्स में फेल्ड इट इज B plus N, और इसे कंपेयर करना है A से. सो दैट विल बी 45 by 60, दैट इज 3 by 4, that is 75%. Okay, shall we move for the next exercise? Now you are getting the concepts. Okay, see this. In a society of 500 families, it was seen that 200 families use solar energy, 270 use LPG, 240 use regular electricity, and 75 families use both solar and LPG, 126 use LPG and electricity, and 62 use solar and electricity. So now it is 3 parameters. Okay, carefully करना.
कौन सा वाला? प्रीवियस एक्सरसाइज का? यस वंदना, कौन सा वाला? प्रीवियस एक्सरसाइज? ओके 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 श्योर. हाँ, यहां देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, राइट? तो वहां आप देखो, ये जो यहां हमारा जो फाइनल डायग्राम बन गया है ना, तो ये जो सर्कल है, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन मैथ्स. ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन पास्ड इन साइंस. ओके, इसमें ये जी जो है वो कॉमन है, मीन्स वो मैथ्स में भी पास हुए, साइंस में भी पास हुए, राइट? उसके बाहर जो है दैट इज दे हैव फेल्ड इन बोथ. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट. तो इसमें क्या है, ये जो 60 है, ये देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ओनली मैथ्स. ओनली इज द इंपॉर्टेंट वर्ड. ये जो 60 है वो सिर्फ मैथ्स में पास हुए, लेकिन वो साइंस के सर्कल के बाहर है. सो एट द सेम टाइम they also represent that they have failed in only science. Again, that only word is important. Okay. Similarly, ये जो 35 है ना, ये 35, that represents that those many students have passed in only science or failed in only maths. So वो दोनों एंगल से represent होता है. And that's why the question is how many students failed in exactly one subject. The required section is A plus B, which is 95. Okay, now is it clear, Vandana? Okay. Yes, definitely. We will go over there. Don't worry. ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो राघव. ये सारे कैट के लेवल की है. हाँ, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम है, थोड़ी. कैट लेवल के लिए, अदरवाइज हाँ, गो फॉर दिस. ये कैट लेवल क्वेश्चन है. ओके, मैं सिर्फ ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं. यस.
फ्रॉम द गिवन डेटा फर्स्ट फाइंड आउट विच सेक्शन इट इन्वॉल्व्स। जो भी कंडीशन है उससे कौन सा सेक्टर, कौन सा सेक्शन रिप्रेजेंट होता है वो पहले निकालो। ओके, टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। फाइनल एग्जाम में भी आप ऐसे ही करना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना आता है उतना ही करना है। डोंट चेस टू मेनी क्वेश्चंस, डोंट चेस टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। सो ये पहला बेसिक इक्वेशन बन जाएगा। इन अ कॉलोनी आउट ऑफ 300 पीपल, सो ये पहला इक्वेशन बनता है कि सम ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एंड एन दैट टोटल इज 300, वेयर मैंने पर्पसली ब्रैकेट डाला है। ए बी सी इज फॉर एग्जैक्ट 1, डी ई एफ इज फॉर एग्जैक्ट 2, जी इज फॉर एग्जैक्ट 3, ऑल। Who read three papers, Hindu, TOI, that is Times of India, and Indian Express. It was seen that 100 read at least 2. Means क्या इक्वेशन बनेगा? At least 2 means कौन सा सेक्शन होगा? At least 2. At least 2 is greater than or equal to 2. So what will be the equation? It will be that is DEFG. DF is exact 2, G is exact 3. At least 2 means it is exact 2 and exact 3. अब जैसे ये इक्वेशन बन जाता है, इफ यू कंपेयर विद दिस बेसिक इक्वेशन, आप इमीडिएटली उसका कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन भी बना दो। कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन क्या होगा? बचे हुए सारे पैरामीटर्स को आपको ऐड करना है, सो दैट विल बी 200। यस, करेक्ट प्रियांशु। ओके, प्रोसीड। DFG जैसे आपको मिल गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो है वो भी इमीडिएट मिल जाएगा, विच इज ABCN, जिसकी वैल्यू होगी 200।
नहीं 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 230 रीड इधर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस मींस ये सारे जो है ना सारे पैरामीटर्स उसमें आएंगे और मींस इट इज यूनियन इन सब की टोटल सो दैट इज ए डी एफ जी एंड सी ई ये सारे पैरामीटर्स आएंगे उसमें ये जो 230 है ना इट इज सी इट इज ईदर और इज यूनियन हाँ करेक्ट सो इट विल बी हिंदू और ये मीन्स ए डी एफ जी सी ई इन सब की टोटल ये है 230 लेकिन ये ऐसे जैसे इक्वेशन बनता है ना ये थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होती है सो वर्क इन रिवर्स वे अब यहां कौन बचा कौन रह गया b प्लस एन तो यहां आपको b प्लस एन ये मिल जाएगा 70 दैट इज द ट्रिक और इधर और इज यूनियन प्लीज रिमेंबर ये जो है ना वो या तो इसमें होना चाहिए या तो इसमें होना चाहिए एंड दैट्स व्हाई इट इज व्हेनेवर इट इज कंडीशन इज ईदर और इट इज ऑलवेज द यूनियन ऑफ दोस टू सेट्स 8 में से 4 की वैल्यू 100 है तो बचे हुए 4 की वैल्यू क्या होगी वंदना DFG is given as 100 तो बचा कौन ABCN ये देखो 100 रीड एटलीस्ट टू मीन्स greater than or equal to 2 that is exact 2 plus exact 3 is it clear okay now 180 read exact one that is ABC so ABC is 180. So if you compare these two equations, we get n as 20. हाँ करेक्ट 80 ओके यहाँ से आ जाए 80 हाँ करेक्ट 80 read none of Hindu or TOI so correct है C plus N is 80 perfect C plus N is 80 correct है राघव correct राघव सो यहां से एबीसी की वैल्यूज क्या मिलेगी एन की वैल्यू तो मिल गई सो एन सी प्लस एन 80 मीन्स सी विल बी 60 बी विल बी 50 एंड ए विल बी 70 and last equation 130 read Hindu or TOI but not I means कौन सा सेक्शन होगा लास्ट 130
ये जो है 130 रीड हिंदू और TOI बट नॉट आई. वन 130 किसकी टोटल होगी? मीन्स अगेन इट हैज टू बी आइदर इनसाइड H और TOI, लेकिन वहां से I को हटा दो. सो ये जो है ये सेक्शन बचा A, D एंड B. दिस इज 130. यस, करेक्ट. So D will be 10. ADB, हाँ ADB नॉट ABB, वो गलती से हुआ है. नहीं राघव, तुम्हारा पहला एक करेक्ट था, ADB नॉट N नहीं आएगा उसमें. प्रियांशु यू आर करेक्ट, इट इज ADB. राघव तुम्हारा पहला ये करेक्ट था. नहीं एन कैसे आएगा ना. सी वो क्या है, या तो इसके अंदर होना चाहिए या तो इसके अंदर होना चाहिए. मीन जो भी है वो इसके अंदर होना चाहिए, तो एन का सवाल ही नहीं होता. और है ना, और सो हिंदू या तो TOI के वो अंदर ही होना चाहिए, लेकिन उसमें से ये पोर्शन हटा दो. ये मीन्स FG को हटा दो. और मीन्स यूनियन. Okay, so now we have almost plotted the total data. अब यहां से हमें क्या कैलकुलेशन से क्या क्या वैल्यूज मिलती है वो भी हमने देखा. नाउ वी आर नॉट गेटिंग द इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ EFG. इंडिविजुअल ओके वो नहीं मिल रही है, बट टोटल EFG ये हमारे पास आ रहा है. इसके कारण जो होगा 90, क्योंकि उसमें से D हमें मिला 10 यहां से. सो D इज 10. ABC की टोटल कितनी है वंदना? यहां देखिए, यहां ये जो दो इक्वेशंस मिले ना, वहां से हमें B और C मिला और ABC की ये वैल्यू है. हाँ ABC की टोटल है 180. उसमें से यहां देखिए इस इक्वेशन में यहां n हमें मिल रहा है 20. करेक्ट, यहां से ये दो कंपेयर करो. सो यहां से हमें n मिल रहा है 20. वो n की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो तो B और C मिल जाएगा और फिर A मिलेगा, तो A विल बी 70. Okay, is it clear? Okay,
अब देखो पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रीड ऑल थ्री। ऑल थ्री मीन्स हमें जी की वैल्यू चाहिए। अब यहां देखिए, यहां मैंने पहले आपको बता दिया कि ई एफ जी इंडिविजुअल वैल्यूज हमें नहीं मिल रही है, ओके, बट ई एफ जी एज ए ग्रुप द वैल्यू इज 90। सो पहला जो है वहां ये ऑप्शन से भी आपको हिंट मिलती है, अपना फेवरेट ऑप्शन, ओके, अपना फेवरेट ऑप्शन जो भी होता है ना, तो वो हमेशा हमें हिंट देता है। सो हाउ मेनी रीड एटलीस्ट, हाँ ये देखो, अब ये थोड़े ट्रिकी कंडीशन है, लैंग्वेज भी ट्रिकी है, प्लीज केयरफुली पढ़ना। हाउ मेनी रीड एटलीस्ट वन ऑफ अदर टू पेपर्स अलॉन्ग विथ आई ई। एटलीस्ट वन ऑफ अदर टू पेपर्स। सो पहले आप बताइए इसमें सेक्शन कौन सा होगा। How many read at least one of the other two papers along with IE? Along with IE मीन्स इसमें क्या है, वो IE इस सेक्शन के अंदर होना चाहिए, ओके, लेकिन वो साथ साथ और मिनिमम एक मीन्स मैक्सिमम और कितने हो सकते हैं वो भी सारे वो पढ़ना चाहिए। मीन्स सेक्शन होगा E, F and G, so that total is 90. That is the twist in the language. That is the beauty of CAT. CAT में अगर आपने देखा ना, तो CAT की लैंग्वेज हमेशा ट्विस्टेड होती है। सो यू हैव टू अनफोल्ड इट, वो हमेशा फोल्डेड होती है, ट्विस्टेड होती है। नहीं, ऑल एक्सक्लूडिंग एन नहीं होगा। आई ई के साथ एटलीस्ट वन ऑफ अदर टू, ये कंडीशन देखिए, एटलीस्ट वन ऑफ अदर टू अलोंग विथ आई, ई एफ एंड जी। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि EFG की इंडिविजुअल वैल्यूज हमारे पास नहीं है, लेकिन उनकी ग्रुप वैल्यू हमारे पास है। सो आंसर इज अचीवेबल, इट इज यूनिक, सो इट इज ऑप्शन बी 90। Yes, correct Priyanshu. And how many read only Hindu? Only Hindu, that is the section is A, और A की वैल्यू है 70। So Raghav, how was the question? Up to the mark?
ये यहां देखिए वंदना, ये इक्वेशन देख, यहां ये डी की वैल्यू हमें 10 मिली, इसलिए ये ईव जी की वैल्यू हमें 90 मिली। यस, कैट इज फेमस फॉर दैट, कैट की स्पेशलिटी वही है। ओके, और डिफिकल्ट चाहिए? ओके, लेट मी चेक। हाँ, यू कैन ट्राई दिस। इसका एक छोटा सा चार्ट चाहिए, वो देता हूं आपको। इसका एक छोटा सा चार्ट है, वो एक्चुअली बाद में वो ये किया तो प्रिंट नहीं हुआ। वो चार्ट सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, ले लो। केयरफुली कर लो। ये चार्ट से भी सॉल्व हो सकता है और वेन डायग्राम से भी हो सकता है, बिकॉज इट इज एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि वहां क्या है, दो डायरेक्टर्स है, एक है एसएस और एक है जेसी, और पीपल जो है जेंडर वाइज वो भी दो है, मेल एंड फीमेल। सो ये वेन डायग्राम से भी बन सकता है साइमल्टेनियसली। मेल एसएस एंड जेसी और वीमेन और फीमेल एसएस एंड जेसी, तो मेन वीमेन या मेल फीमेल जो भी आप कहेंगे। यस, शुरुआत कहां से करेंगे? Read the given data carefully. There is a partial data of 160 people in a building. There are some men and some women who like the films of directors SS and JC. Chart is to be referred. Every man who likes JC's films also like SS films. Number of women who like films of both the directors is half of the number of men. 45% total people like JC's films. और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ईच पर्सन लाइक्स फिल्म्स ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर्स। व्हाट डज दिस इंडिकेट? यस, टोटल मेल इज 60। करेक्ट है, करेक्ट है।
So male is 60, female will be 100. करेक्ट. लेकिन ये लास्ट स्टेटमेंट क्या दर्शाता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ, correct. Number of women who like films of both the directors is half the number of men. So here it will be 30. Correct. Okay, proceed. Correct है, you are on the right track. वो लास्ट स्टेटमेंट का मतलब क्या है राघव? परफेक्ट. So here n will not exist, here also n will not be there. Correct, absolutely correct. And that's why here ये पांचवा कॉलम यहाँ मैंने बनाया नहीं. Okay, so यहाँ ये कॉलम नहीं बनाया. So if you number these columns, say 1, 2, 3 and 4, तो sum of 1 plus 2 should be equal to sum of 3 and 4. मीन्स सम ऑफ एसएस एंड जेसी शुड बी इक्वल टू बोथ एंड टोटल. सो ये है 130, मीन्स ये आएगा 60. सो यहां देखिए क्या होता है, ये बोथ में फीमेल, दिस विल बी 30, दिस विल बी 30 एंड दिस विल बी 40. करेक्ट. नंबर ऑफ वीमेन शुड बी एग्जैक्ट 100, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा. ठीक है. नाउ ये कंडीशन हमने ले ली. 45% ऑफ टोटल पीपल लाइक जेसीज फिल्म. सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 45% ऑफ 160. अब ऐसे केस में ये 45 जो है, स्प्लिट इट एज 50 minus 5. नाउ 50% विल बी 80. 1% is 1.6, 5% is 8, so it is 80 minus 8, so it will be 72. So 45% of total people like JC's film means ये होगा 72. ये 72 means ये होगा 12. ये 12. अब ये पहली कंडीशन की तरफ आते हैं. सो ये कंडीशन भी हमने ले ली, ये कंडीशन ले ली. एवरी मैन हु लाइक्स जेसीज फिल्म्स ऑल्सो लाइक एसएस फिल्म्स. करेक्ट. मीन्स ये बोथ मेन में ये जाएगा. फीमेल 100 है, टोटल 160 है. So number of men will be 60. ओके. सो अब ये 12 हो गया. मीन्स ये बैलेंस करने के लिए ये हो जाएगा 60. सो दिस विल बी 130
and this will be 42. अब ये वेन डायग्राम हमें फिल करना है. बोथ मेल इज 12. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है. बोथ मेल इज 12 एंड जेसी की लाइक करने वाली भी 12, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 48. नहीं, only male will be 48 and both is 12 they have given. इक्वेशन देखो बैलेंस होता है क्या. दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. ये जो है ना, ये सेक्शन, ये सबसे ट्रिकी है. 1 + 2 is 202 और ये भी 202. इक्वेशन इज बैलेंस्ड. This is the most tricky part, that number of male watching only JC's films is 0. That is the most tricky part. और वो क्वेश्चन भी वहां रिफ्लेक्ट करता है. क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी men like only SS films? सो आंसर्स क्या मिले? ए जो है, हाउ मेनी मेन लाइक ओनली एसेस, इट इज 48. एंड हाउ मेनी पीपल लाइक फिल्म्स ऑफ बोथ द डायरेक्टर्स, इट इज 42. Okay, Raghav, satisfied? Correct, Vandana. That's why I say don't chase difficult questions. आपको एग्जाम में इजी और डिफिकल्ट दोनों क्वेश्चंस आते हैं. दोनों क्वेश्चंस को सेम ही मार्क्स होते हैं. Then why chase difficult questions? That is the simple logic. In some exams I have seen कि इजी क्वेश्चन जो होते हैं उनको 2 मार्क्स होते हैं, और जैसी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है तो मार्क्स भी 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते जाते हैं. लेकिन यहाँ देखिए कैट में ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स.
सो डिफिकल्ट को भी 3 मार्क्स है और इजी को भी 3 मार्क्स है. सो अटेम्प्ट ओनली इजी क्वेश्चन मीन्स नॉर्मल तक. वेरी इजी, इजी, नॉर्मल, डिफिकल्ट एंड वेरी डिफिकल्ट. डोंट चेस दैट टॉप 4 and 5. Okay, solve one more. यस वंदना, आई एग्रीड. लेकिन परसों वो क्या हुआ, मेरा नेट का प्रॉब्लम था, सो मोबाइल का स्क्रीन भी स्क्रॉल नहीं हो रहा था. प्रियांशु ने सही कहा है, कैट इज इक्वल टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. बिल्कुल सही है. कई बार इजी क्वेश्चंस आते हैं. मीन्स वी एक्सपेक्ट फॉर बाउंसर और आता है फुल टॉस. जस्ट अ मिनट, एक फ्यू सेकंड्स में आता हूं. Now it is of 2 parameters, लेकिन इक्वेशन करेक्ट बनाओ. पहले इक्वेशन तो बेसिक कंडीशन से ही बन जाता है, राइट? इज 100. बी प्लस नहीं, सी कहां से आया? $45 use bikes means A plus G is 45. A plus G हो गया तो B plus N इमीडिएट दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 55. नहीं B plus G नहीं दिया है.
सी कंडीशन देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नीदर बाइक नॉर स्कूटर मीन्स दैट सेक्शन इज एन इज 25% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कूटर. तो स्कूटर जिनके पास है तो n इज इक्वल टू 1/4 ऑफ b प्लस g. Or 33.33% is nothing but students having bikes also have scooters. So it is 1/3 of scooters means it is b plus g, bikes and scooters, right? Having bikes also have, no, sorry, ये गलत हुआ, 1/3 of a plus g, I'm sorry. कंडीशन है 33.33 means it will be 1/3. So 1/3 having bikes also have scooters. So here if you solve this equation you will get a is equal to 2g means g will be 15, a will be 30. Again see the language थोड़ी सी tricky है. एंड नाउ यू विल गेट टू इक्वेशंस. अगर ये आप सॉल्व करते हो ना तो यू विल गेट b plus 15 is 4n. So now you can compare these two equations. हाँ correct, g is 15. So b plus n is 55 and b minus 4n is equal to minus 15. So if you subtract, तो 5n is 70, तो n आता है 14 and b आता है 41. यस और चाहिए क्वेश्चंस? हाँ लास्ट स्टेटमेंट इज ट्रिकी. यस okay, no, I have another session, so we'll have to conclude. Yes, that was one. I will get some questions tomorrow. Okay.
So wish you all a very happy and prosperous and at the same time the safe Diwali. Okay, wish you all the best. Okay, shall we conclude? Right? It was really nice talking with all of you.